Yeah. In text exercise number 2, question number 8. I hope सब लोग ने question attempt किया होगा. Once again, go through the question. They're saying 1 mole of a mixture of N2, NO2 and N2O4 has a mean molar mass of 55.4. इसका मतलब AMU होगा 55.4 AMU और 55.4 gram per mole. On heating to a temperature at which all the N2O4 may be presumed to have dissociated, and its equation is N2O4 is converting into 2NO2. The mean molar mass tends to the lower value of 39.6. Okay, they're asking what is the mole ratio of N2 is to NO2 is to N2O4 in the original mixture. किसी ने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन? Can everyone hear my voice? Take 2 minutes of time. First try to understand the question. We will discuss. Take 2 minutes of your time. और जो मीन मोलर मास करके कुछ दिया है ना, उससे क्या समझ में आया तुम लोग को? बताओ. एनीवन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मीन मोलर मास? उनका सबका एडिशन करके उनका सबका एडिशन करके मतलब सिस्टम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उन सब मॉलिक्यूल्स का मासेस का सम करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. वैसे कुछ बोल रहे हैं ना तुम? यस. ओके ओके, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज weight upon molecular weight, right? Suppose in the container मान लेते हैं there is only N2. In that case the weight will be equal to the weight of N2, the moles will be equal to the moles of N2, and if you are finding the molecular weight you will get the molecular weight of N2. एक container है, उस container के अंदर there is only N2. In that case जो भी molecular weight calculate करेंगे using the formula, molecular weight क्या हो जाएगा? It will be weight of the mixture divided by total number of moles. In this particular case N2 अकेला ही है, there is no mixture, so you will get the molecular weight of N2. Suppose इसी container के अंदर if I am adding further more gases NO2 as well as N2O4, even in this particular case you can calculate something like number of moles is equals to weight of the mixture divided by molecular weight. In this case वो जो molecular weight है, this is nothing but mean molar mass, or you can also say it is average molecular weight. Okay, weight of the mixture मतलब क्या होगा? Weight of the mixture is nothing but sum of masses of all the molecules divided by n. Divided by n का मतलब क्या है? Nothing but total number of molecules. So you are adding masses of all the molecules and you are dividing it by total number of molecules, which is nothing but the mean molar mass. In this particular case जो molecular weight आएगा तुम लोग को, that molecular weight is nothing but the mean molar mass. Okay, ये वाला part clear है? What is meant by that mean molar mass? Total mass of the system divided by total number of moles will give you some average molecular weight. That average molecular weight is of the mixture. Now you are having 1 mole of mixture of N2, NO2 and N2O4. The mixture has N2,
NO2 and N2O4. Suppose if you are taking N2 as some X number of moles, NO2 as some Y number of moles, N2O4 कितना होगा? Total number of moles are 1. So N2O4 will be 1 minus X minus Y होगा. Initial एक बार डेटा ऑब्जर्व करो. Initial mean molar mass दिया है हमको 55.4, and they are saying that entire N2O4 got converted into NO2 using this particular reaction. In this reaction, if you can observe the stoichiometry, for every mole of N2O4, you are forming 2 moles of NO2. So during the reaction, what is happening to the total moles inside the mixture? Are they increasing or decreasing? Increasing. Increasing. For every 1 mole, you are forming 2 moles. Okay. So the total moles inside the mixture are increased. अभी ये mean molecular weight के लिए formula देखो. Molecular weight is weight upon number of moles. Upon heating N2O4, वो जो mixture है, total mass of the mixture, will it change or will it remain constant? Mass of the mixture. System के अंदर N2 है, NO2 है, N2O4 है. On heating it, I am converting N2O4 into NO2. Because of this particular reaction, will the mass of the mixture, will it change or will it remain same? Same. Will remain same because there should be conservation of mass. So numerator जो है वो अभी भी वही है, जो पहले था numerator अभी भी वही है. The mass of the mixture is remaining constant. जो moles है, the denominator it got increased. Initially you have, if you are having some moles of N2O4, now they are doubled, and while forming NO2, the number of moles got doubled. Okay, for every 1 mole you are getting 2 moles of NO2. So ये जो denominator है total moles वो increase हो गया ना. So इसलिए mean molecular weight क्या हुआ है देखो इधर. It is tending to a lower value of 39.6. Okay. So initially 55.4 है, it is that now it is 39.6. वो decrease क्यों हुआ है? Because increase in number of moles. Calculation के लिए just go with the formulas. Initial mean molar mass कितना दिया है? 55.4. So substitute 55.4 equal to 55.4 equal to what will be the weight of the mixture? If you are having X moles of N2, the mass of N2 will be X into 28 plus mass of NO2 will be Y into what is the mass of NO2? Nitrogen 14 है, ये 32 है, it is 46 plus mass of N2O4 is 1 minus X minus Y into N2O4 is 92 divided by total moles. Total moles कितना है? 1, right? X plus Y plus 1 minus X minus Y. So if you substitute this, आएगा क्या? 55.4 will be equal to 28X plus 46Y plus 92 minus 92X minus 92Y. This implies calculation करोगे क्या? ये 92X minus 28X, this is minus 64. वो इस साइड आ गया तो 64X plus 46Y, 92 minus 46 is minus 46, is equals to 92 minus 55.4, 36.6. Let this be equation 1. थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा. अभी ये जो N2O4 है in the system, it got converted into NO2. What is the number of moles of N2O4? They are 1 minus X minus Y. So from every 1 mole, if you are getting 2 moles, so NO2 found will be 2 times 1 minus X minus Y. So what will be the
moles of N2 now. N2 का तो कुछ नहीं हुआ, so they will remain X. Moles of NO2 क्या होगा? Initial moles जो है, those are Y plus 2 minus 2x minus 2y, which is equal to 2 minus 2x minus y. इस particular case के लिए what will be the mean molar mass? Molecular weight will be equal to weight, which is again 28x plus, अभी ये weight के केस में इनिशियली जो लिया है ना हमने x into 28 plus y into 46 plus 1 minus x minus y into 92, सेम वैल्यू पुट कर सकते हो because the weight is not changing. Or if you don't want to put that particular value, you can again write it is 28x plus बचा हुआ 2 minus 2x minus y into NO2 का mass 46 divided by total number of moles are, now total number of moles are x plus 2 minus 2x minus y. इसका वैल्यू दिया हुआ है 39.6. So I can again write 92 minus 64x minus 46y is equals to 39.6 times 2 minus x minus y. This is equation 2. If you solve for equations 1 and 2, there are two unknowns x and y, and you are having two equations. दो unknowns के लिए दो equations काफी है. If you solve for equations 1 and 2, you will get the answer. If you don't want to solve, you can substitute the options. 0.5 is to 0.1 is to 0.4, 0.6 is to 0.1 is to 0.3. ये दोनों equations में से कोई भी equation में substitute करो. X is our N2 percentage and Y is our NO2 percentage. So x के प्लेस में 0.5 पुट करो, y के प्लेस में 0.1 पुट करो. एक बार देख लेते हैं. x के प्लेस में 0.5 पुट किया तो it will be 64 into half plus 46 into 0.1. कितना होता है? This is 32 plus 4.6. What is 32 plus 4.6? Nothing but 36.6. Satisfy हुआ ना? So option A has to be the answer. बाकी ऑप्शंस भी पुट करके चेक करो. अगर सब्स्टिट्यूट करके अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए. आइडियली सेटिस्फाई नहीं करेंगे. सो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो ऑप्शन ए हैज टू बी द आंसर. एवरीवन? यस सर. देखो पहले क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव है, बट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है. क्वेश्चन में ये दिया है, दे हैव गिवन यू द मीन मोलर मास. सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है. मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोल्स. एज द मिक्सचर इज हैविंग N2 NO2 and N2O4 टुगेदर, जो भी मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर रहे हैं हम, दैट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. एवरेज के लिए हमेशा क्या है? सम ऑफ ऑल एंटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज. सो sum of masses of all the particles divided by total number of particles, which is nothing but weight of the mixture divided by total number of moles. Okay, so 55.4 must be equal to weight of the mixture. क्या होगा इसका? x moles, y moles. इसका इतना moles लिया तो weight is equals to again moles into molecular weight, x into 28 y into 46 plus 1 minus x minus y into 92 divided by total number of moles are 1. इससे एक इक्वेशन आया हमें. On heating क्या हुआ है? N2O4 जो है it got dissociated into 2NO2. On heating the number of moles of the mixture is increasing. If the denominator is increasing, overall molecular weight क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा. So इसलिए देखो इधर 39.6 मिला है. Okay. So N2O4 initially the moles are 1 minus x minus y. It is converting into 2NO2. So for every 1 mole 2 moles बन रहे तो इतने moles के लिए 2 into 1 minus x minus y मिलेगा. Moles of N2 कितना है? Already हमने पहले लिया है, x moles है. On heating moles of N2 तो are not changing. So ये भी x होगा. Moles of NO2 कितना होगा? Initially already y है, अब इतना बना है. So it is y plus 2 into 1 minus x minus y, which is 2 minus 2x minus y. Now the average molar mass will become again total mass upon total number of moles.
टोटल मास क्या होगा, उसका मोल्स इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट, इनका मोल्स इंटू करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय टोटल मोल्स आर x plus 2 minus 2x minus 5. So if you are solving these two equations, if you want to solve them, you can solve them and you can get the answer. But exam में जल्दी जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, एक बार equations form कर लिया, substitute the options and cross check. Option A substitute करने से आ गया है वो, so option A is the right answer. Option A आया तो option C obviously नहीं आएगा, उसमें 0.2 से multiply कर रहे हैं हम. And option B भी नहीं आएगा because इसमें 0.1 common है, ये तो 0.6 हो गया. And option D भी नहीं आएगा, A भी change हो गया, A भी हो गया change. Okay, so केवल option A ही satisfy करेगा. समझ में आ रहा है? Is this question clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया है घर पे तुम लोग? पहले वो बताओ. यस सर किया है? किसी को आंसर आया है? If you are not giving enough time for solving question, जो भी नया क्वेश्चन है, you will never realize your potential. Yes, ये जो क्वेश्चन है तुम लोग घर पे खुद करके सोच के भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. If you are not understanding what is meant by mean molar mass, you can take the help of Google. उसमें एक बार mean molar mass करके कुछ टाइप किया तो समझ में आ जाएगा. Mean molar mass, it is also called as average molar mass or average molecular weight. Okay, I'm going to next question. ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव ही है. Before going into this particular question, किसने क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट किया है? यस सर किसी ने अटेम्प्ट किया है? यस सर Yes, sir. आंसर आया क्या? किस को इसका No, आंसर आया sir. है बताओ. क्वेश्चन क्या है? सैंपल ऑफ क्ले वाज पार्शियली ड्राइड एंड देन इट कंटेन 50% सिलिका एंड 7% वाटर. ड्राई करने के बाद उसके अंदर 50% सिलिका है एंड 7% वाटर है. द ओरिजिनल क्ले कंटेन 12% वाटर. मतलब वो जो 5% वाटर है वो एवापोरेट हो गया होगा. फाइंड द परसेंटेज ऑफ सिलिका इन द ओरिजिनल सैंपल. ओके, you can always start with assumption of some mass of the substance. You can start with in general percentage दिया तो we will be starting with 100 grams of the sample. Step by step चलते हैं. Let the original samples mass. Let the mass of original सर sample 50% ही रहेगा. 50% ही रहेगा. 50% क्यों रहेगा? इनिशियली जो क्योंकि है, सर ड्राइड हुआ है इसलिए वाटर ही कम होगा ना. हाँ वाटर कम हुआ है बट टोटल मास में से थोड़ा मास कम हो गया. अब उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा ना. हाँ, अभी ऐसे सोचो. 52.7. हाँ, इट विल द परसेंटेज इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? इंक्रीज. जैसा हाँ वो नया सैंपल में इंक्रीज होगा, सो ओरिजिनल सैंपल में कम होना चाहिए. सो आंसर हैज टू बी अमॉन्ग सी और डी. आफ्टर हीटिंग, because as the moisture got escaped, the percentage of silica will be increased. After heating, the percentage is 50%. So initial percent must be less than 50%. So the answer should be among C or D. But calculation करके देख लेते हैं. C और D में से होना चाहिए आंसर. ये सब लोग को समझ में आया? यस सर. Yes, sir. Okay. Okay, let the mass of original sample be 100 grams. Then what will be the mass of water in this? Original sample में mass of water कितना है? 12 grams. 12% दिया है ना, so it will be equal to 12 grams. What will be the mass of silica? इस particular 50 question ग्राम.
नहीं नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, वही फाइंड करना है हमको। ओरिजिनल सैंपल में बात कर रहा हूँ मैं, मास ऑफ सिलिका इन ओरिजिनल सैंपल। Let that be some x grams. Okay. On heating, let y grams of water, हमको exactly कितना गया है वो पता नहीं ना, let y grams of water got evaporated. So H2O remaining कितना होगा, mass of H2O left will be equal to 12 minus y grams. Initially 12 grams है mass of water. Whenever I am heating it, some amount of water gets evaporated. Let us suppose that amount of water is some y. So बचा कितना है, 12 minus y gram. Okay. What will be the mass of the sample left? Mass of the sample के left कितना होगा, 100 grams लिया है, उसमें से y gram चला गया, तो बचा कितना है, 100 minus y grams. Yes, What sir. will be the percentage of H2O? It will be 12 minus y upon 100 minus y into 100, and this is given as 7%. So from this, can you calculate the value of y? Yes, sir. कर सकते हो. So this is 1200 minus 100y is equals to 700 minus 7y, or else I can say 93y is equals to 500, or y is equals to 500 upon 93. Y is equals to 500 upon 93 grams. Okay. Okay, एक मिनट. ओरिजिनल न्यू सैंपल में परसेंटेज ऑफ सिलिका भी पता है हमें. व्हाट इज द मास ऑफ सिलिका, अभी भी x ग्राम से रहेगा. परसेंटेज सर 53 पॉइंट सम कुछ आता है. 53 पॉइंट कुछ क्यों आएगा, 53 पॉइंट नहीं आना चाहिए, आंसर उससे कम आना चाहिए. They are asking the percentage of silica Sorry, in the original 5.3. sample. 5.3. 5.3. अच्छा, ये 500 upon 93 बोल रहे क्या तुम? हाँ सर. 500 upon 93. और कैलकुलेशन जब तक लास्ट तक नहीं चलते हैं तब तक कैलकुलेशन मत करो, लास्ट में भी करना पड़ता है कैलकुलेशन. हाँ ओके सर. ओके, सो परसेंटेज ऑफ सिलिका विल बी इक्वल टू सिलिका का मास डिवाइडेड बाय सैंपल मास कितना हुआ है अभी, 100 माइनस y into 100. दिस इज गिवन एज 50%. कैंसिल कर देना ये. So it is 2x is equals to 100 minus y, or 2x is equals to 100 minus 500 upon 93, or 2x will be equal to 9300 minus 500. It will be 8800, or x is equals to 8800, or it is 4400 upon 93. इसका वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आता है, देखो. $47.3. 47.3. So the answer is 47.3%. किस किसने क्वेश्चन पहले ही घर पे अटेम्प्ट किया है और किस किस को सॉल्व हुआ है ये वाला क्वेश्चन?
Please answer me. एक बार फिर से सॉल्यूशन ऑब्जर्व करो. I have taken the original sample as 100 grams, and if you know the percentage of water as 12, so 12 grams will be of water. Let the mass of silica be x grams. Then they are saying on heating the percentage of water has changed to 7%. So let the mass of water that got escaped be y. So the mass of water that is left in the final sample is 12 minus 5 grams. Final mass of the sample is 100 minus 5 grams. So percentage of H2O will be equal to mass of H2O divided by total mass into 100, which is 12 minus 5 upon 100 minus 5 into 100, which came out to be 7. क्वेश्चन में दिया है वो 7. So उसको सॉल्व किया तो y का वैल्यू आ गया. परसेंटेज सिलिका भी दिया है 50%, which is mass of silica x divided by sample mass, which is 100 minus 5 into 100, it is given as 50. So calculated value जो भी है y का इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, you will get the value of x. 7:30 ते 9:30 आहे ना? 9 ते 9:30. हा नाही सकाळी होतं टायमिंग होती किती कालची? 7:30 ते पहिली बॅच दुसरी बॅच. पहिल्या बॅचला हे करीत जा सकाळी उठून. Clear है? कसा येतं त्याच्यात माणसाला कधी पण ठोकवू शकतो. सांगून येतोय ठोकतो. 47.3 grams है. The sample mass we have taken it as 100 grams. So 47.3 grams है तो percentage is again equal to 47.3%. 47.3 upon 100 into 100. Is this question clear to everyone? Yes, sir. Okay. कस्टमर काय विचारते काय? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया क्या? इन टेस्ट एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 8. Please understand the question and please answer me. रेकॉर्डिंग चालू आहे की 20 ml of 0.2 molar Al2SO4 thrice is mixed with 20 ml of 0.6 molar BaCl2. They're asking the concentration of Al3 plus ion in the solution. Concentration of Al3 plus ion in the solution. I request parents to please be silent. Dear parents, please be silent. Question number 8. सब लोग 20 ml of 0.2 molar Al2SO4 thrice is mixed with 20 ml of 0.6 molar BaCl2. They're asking the concentration of Al3 plus ions in the solution. ये जो Al3 plus है, it is formed from only Al2SO4 thrice. Will I get Al3 plus from BaCl2? No, sir. No, right? So system के अंदर जो भी Al3 plus है, it is only from Al2SO4 thrice. If you can observe, for every one molecule of Al2SO4 thrice, you are getting 2 molecules of Al3 positive. Sir. एक बार उसका Yes, रिएक्शन sir. लिख देते हैं. Al2SO4 thrice gives rise to 2 Al3 positive plus 3 SO4 2 minus. अभी इसका वॉल्यूम कितना दिया है 20 ml एंड इसका मोलारिटी कितना दिया है 0.2 मोलार. If you know the volume and if you know the molarity, can you find the number of moles? Yes, sir. Moles क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है? Yes, sir. और molarity is equals to moles upon volume in liters. So moles क्या हो जाएगा? Molarity which is 0.2 into volume कितना है 20 into 10 raised to minus 3 liters. So what are the moles of Al2SO4 thrice? 4 into 10 raised to minus 3 moles.
4 into 10 raised to minus 3 moles. Good. 4 into 10 raised to minus 3 moles. So from every molecule of Al2SO4 thrice, you are getting 2 ions of Al3 positive. So from 4 into 10 raised to minus 3, ये कितना आएगा? It will be 8 into 10 raised to minus 3. They are asking the concentration of Al3 positive ion. To this particular Al2SO4 thrice solution, you are adding another 20 ml of some 0.6 molar. वो कितना भी molarity है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, because you are not adding Al3 positive upon addition of BaCl2. In a way, this particular solution is acting like water. Dilution जैसा ही कुछ हुआ. अभी total volume कितना हो गया? 20 plus 20, 40 ml. Molarity of Al3 positive क्या होगा? It is nothing but moles of Al3 positive divided by total volume. Volume in liters. Moles of Al3 positive कितना है? 8 into 10 raised to minus 3 divided by what is the total volume? It is 40 into 10 raised to minus 3. Total volume is 40 ml, but you need to substitute the volume in terms of liters. 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3 cancel होगा, which is nothing but 1 upon 5, which is equals to 0.2 molar. ये वाला पार्ट समझ में आया? क्या किया मैंने? Yes, sir. First of all, just try to understand the question. In the solution, you are having Al2SO4 thrice. To that particular solution, you are adding some more amount of 20 ml 0.6 molar BaCl2. Initial molarity of Al2SO4 thrice is 0.2 molar and the volume is 20 ml. From that, you can calculate the moles of Al2SO4 thrice. Moles is equals to molarity times volume. Moles is equals to molarity times volume. Molarity दिया है हमको 0.2 और volume दिया है 20 ml. And from the stoichiometry हमको Al3 positive का पूछ रहे हैं. अगर Al2SO4 thrice का पूछ ले तो क्या होगा? It will be 20 into 0.2 divided by 40 हो जाएगा Al2SO4 thrice का. But they are asking for Al3 positive. From every 1 mole you are getting 2 moles. ऐसा कुछ बोल सकता हूँ क्या? अगर इसका मोलारिटी Al2SO4 thrice का 0.2 मोलर है तो Al3 पॉजिटिव का इस 20 ml सॉल्यूशन में 0.4 मोलर हो जाएगा. Can I say that? Yes, sir. In the 20 ml of it, I'm not Yes, sir. saying after addition of 20 ml. In the 20 ml, I can say the molarity of Al3 positive will be 0.4 molar. उसका लॉजिक क्या है? मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम. ये जो मोल्स है ये 2 हुआ है. Al2SO4 thrice से ब्रेक होके you are getting 2 moles of it, but the volume is not changing. Volume will remain 20 ml. So molarity भी क्या हो जाएगा? It will be twice that of 0.2 molar. It will be 0.4 molar. Okay. 0.4 molar before addition of this particular 20 ml. Addition होने के बाद क्या होगा? हमारा जो dilution law 0.4 into 20 into 10 raised to minus 3 upon 40 into 10 raised to minus 3. वैसा भी कर सकते हो. ये जो क्वेश्चन है डिफिकल्ट लगा क्या? No, sir. If you are Yes, having sir. any query, please ask me. If you are having any doubt, if I am asking something, please answer me. तुम लोग के लिए पूछ रहा हूँ मैं. Is this particular question clear to everyone? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. तुम लोग छुट्टी नहीं दिया करके नाराज हुआ क्या? बात नहीं कर रहे आज? No, sir. ऐसा No, कुछ sir. नहीं। No, sir. अच्छा ठीक है छुट्टी देता हूँ लॉकडाउन का बंद हो जाएगा ना उसके बाद फर्स्ट वीक विल बी हॉलीडेज. डोंट वरी. Okay, sir. But whenever you are having any query, please ask me. I will feel better. तुम लोग पूछा तो मुझे पता चलेगा तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है. And I will try different method. Okay.
Shall I Yes, go to sir. next question? Yes, sir. Yes, sir. Before going into next question, पहले एक shortcut समझते हैं. Molarity is equals to moles upon volume in liters. Suppose if you are not substituting the volume in liters, ऐसा क्यों करेंगे हम? Because most of the times in the question the volume will be given in terms of ml. So बार बार उसको liters में convert करते ऐसा करने की जरूरत नहीं है. Suppose if you are multiplying the numerator and denominator by 10 raised to minus 3. What is 10 raised to minus 3 liters equal to? Nothing but ml हो जाएगा. So in that case I can write 10 raised to minus 3 जो है उसको मिली बोलेंगे ना. So millimoles divided by volume in ml. Molarity is either moles upon volume in liters or millimoles upon volume in ml. Else, if you are multiplying the molarity with volume in ml, you will get millimoles. Is this logic clear? क्योंकि बार बार ऐसा moles में analysis करने के अलावा you can do the analysis in terms of millimoles. No need to convert or no need to add that particular 10 raised to minus 3, 10 raised to minus 3. वो देखने के लिए थोड़ा clumsy लगेगा ना. Yes, sir. Okay, you can either do the analysis by taking volume in ml, but ये याद रखना, if you are multiplying molarity with volume in ml, you won't get moles, but you will get millimoles. You are substituting the volume in liters, you will be getting moles. Okay, or else final point जैसा एक ये लिख सकता हूँ. नोट करके लिखते हैं. Note molarity into volume in liters will be equal to moles. Molarity times volume in milliliters will be equal to millimoles. अभी ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो. What volume of 0.1 molar H2SO4 must be added to 50 ml of 0.1 molar NaOH solution to make a solution in which the molarity of H2SO4 is 0.05 molar. Molarity of H2SO4 is 0.05 molar. Can anyone tell me the reaction between H2SO4 and NaOH? What is that reaction called? Neutralization reaction. Very good. It is called as neutralization reaction. If you are having H2SO4, that on reaction with NaOH, H2SO4 is an acid. Acid plus base will give you salt and water, and that particular reaction is Salt called and as water. neutralization reaction. Na2SO4 plus H2O. इसको balance करने के लिए you need to take this as 2NaOH, and this will be equal to 2H2O. Okay. They're asking what volume of 0.1 molar H2SO4 must be added to 50 ml 0.1 molar NaOH to make a solution in which molarity of H2SO4 is 0.05 molar. If they're asking or if they are conveying that H2SO4 is having molarity of 0.05 at the end, इसका मतलब H2SO4 क्या होना चाहिए? Excess reagent होना चाहिए. If Yes, sir. H2SO4 is not excess reagent, this won't be left in the system because ये दोनों के बीच में reaction होके क्या बन रहे हैं? Na2SO4 और H2O. If H2SO4 is not an excess reagent, this won't be left in the system. अगर ये पढ़ा नहीं है तो you won't be having molarity of H2SO4. They are saying that at the end of the reaction, the molarity of the H2SO4 is 0.05 molar. Okay. So let us first calculate the moles of NaOH and let us try to calculate the moles of H2SO4. इन दोनों के बीच में reaction करवाते हैं. Suppose मान लेते हैं what volume of 0.1 molar H2SO4 दिया है ना. Let us say the volume of H2SO4 added. इधर लिखते हैं volume of
H2SO4 added is equal to V ml में ले रहा हूं मैं. Okay, so what are the moles of H2SO4? Initial 0.1 V. 0.1 into V. मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है और मोलारिटी के लिए फॉर्मूला क्या है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. इफ यू आर हैविंग द वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ml, you will be getting millimoles. तो अभी जो आएगा, these are initial, इधर ही लिख रहा हूं मैं, millimoles, which is molarity times volume, 0.1 into V. What are the millimoles of NaOH? It is 15 into 0.1. 15 into 0.1 कितना हो गया? Nothing but 5 millimoles. Right. From the stoichiometry, for every 1 mole, you are adding 2 moles of NaOH, or else 2 mole NaOH. NaOH is a limiting reagent ना, ये पूरा खत्म हो जाएगा, H2SO4 बच गया. 2 mole NaOH reacts with 1 mole H2SO4. अभी कितना लिया है हमने? 5 millimole. 5 millimole NaOH will react with 2.5. it will be 5 upon 2 or 2.5. 2.5, 2 के लिए 1 नहीं तो 5 के लिए उसका आधा, 2.5 millimole of H2SO4. बट हमने लिया कितना है? 0.1 V, 0.1 V taken, 0.1 V millimole. This is reacted. What will be the left amount? What will be the left amount of H2SO4? 0.1 V minus 2.5 millimole. 0.1 V minus 2.5. This is equal to 0.1 V minus 2.5. Okay. What will be the molarity? Molarity of H2SO4. Molarity के लिए क्या करना पड़ेगा? Again, you need to divide millimole by volume in ml. Millimole कितना है? 0.1 V minus 2.5. Volume in ml is, initially you are having 50 ml. You are adding that to 50 ml na? It will be V plus 50. And this they gave it as 0.05. Now calculate the value of V. Calculate the value of V. Hundred. 100. Yes, sir. सबको 100 आया है? Yes, sir. So V is equals to 100 ml. So answer is C. Again, please go through the question and please understand the question. They are saying that H2SO4 is reacting with NaOH, and after the end of the reaction, they are saying the molarity of H2SO4 is 0.05. If H2SO4 is reacting with NaOH, there will be neutralization reaction. If they are saying that H2SO4 is left at the end of the reaction, H2SO4 must be excess reagent. Entire NaOH is being consumed. So if I am taking V volume of H2SO4, the moles of it, ये interconversions करना तुम लोग को obvious होना चाहिए. If you are given molarity, volume, you can find moles. If you are given moles and volume, you can find molarity. If you are given molarity and moles, you can find the volume. ये जो interconversion इस formula से interconversion करना obvious होना चाहिए. Whenever you do any stoichiometric analysis, we are interested in moles.
So molarity पता है, volume पता है, you can find the moles. अभी इस particular case में if I am taking the volume in terms of ml, the analysis will be in terms of millimoles. ये याद रखना. Okay? ठीक है. अब ये 0.1 into V हुआ, NaOH का moles are 5 millimoles. For every 1 mole, 2 moles of NaOH are used. So 5 moles के लिए H2SO4 कितना यूज होगा? 2.5 millimoles यूज होगा. So the millimoles of H2SO4 left are 0.1B minus 2.5. The concentration will become, molarity will become उसका millimoles upon volume in ml. Volume is V plus 50. ये 0.1B minus 2.5 and that is given as 0.05. So उसको solve करने से you got volume as 100. Is this question clear? ऐसा ही क्वेश्चन और एक है, वो वाला क्वेश्चन अभी तुम लोग करना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन. क्या होता है H2SO4 NaOH के बीच में रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. द वॉल्यूम ऑफ 0.6 मोलर NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 30 cc ऑफ 0.4 मोलर HCl. $20. 20 is the right answer. To neutralize HCl मतलब क्या है? The entire HCl must be reacted. Okay, for complete neutralization. For complete neutralization, can I say moles of NaOH must be equal to moles of HCl? क्योंकि रिएक्शन क्या है उसका 1 mole जो है NaOH, it will react with 1 mole of HCl to form NaCl plus H2O. In the reaction, the ratio is 1:1. Hence, I am saying for complete neutralization, moles of NaOH must be equal to moles of HCl. Okay, what are the moles of HCl? It is nothing but uska molarity, which is 0.4 into uska volume, which is 30 ml. ये millimoles हुआ. इसका क्या होगा? Moles of NaOH, उसका molarity into उसका volume sum V मान लेते हैं. For complete neutralization, 0.6 V must be equal to 0.4 into 30. Okay, so V will be equal to 4/6 times 30. ये कितना होगा? 20. Which is equal to 20. So the answer is 20 cc or 20 ml. 1 cc is equals to 1 ml. They're saying what they're asking, what volume of 0.6 molar NaOH is required to neutralize 30 ml of 0.4 molar HCl. For complete neutralization, if you are writing the equation, 1 mole is reacting with 1 mole of HCl. So first find the moles of HCl, which is molarity times its volume. That must be equal to molarity times volume of NaOH. Clear? Okay. Solve this question. Excess H2S is bubbled through 0.1 molar 1 liter solution of CuCl2 and 1 liter of water is added to the solution after the reaction is complete. Then you need to answer the following statements A, B, C, D.
solve the question and tell me your answer. The atomic weight of copper is 63.5. Sir, हाँ, is the answer multi-correct? या उस वर्कशीट में तो एक ही दिया है, बट द आंसर इज मल्टी करेक्ट. कौन सा आंसर आया तुम्हें? कौन सा ऑप्शंस? A and ए एंड B. ए एंड बी आया क्या? ओके, एक बार क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ना. दे आर सेइंग 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद and 1 liter of water is added to the solution. They are again adding 1 liter water. They are diluting it by adding 1 liter of water. अब क्या हो जाएगा आंसर? Answers, please. किस किस को क्वेश्चन समझ में नहीं आया बताओ. Sir, A and C. A and C is the right answer. Yes, sir. A and C. A and C is the right answer. Both very good. बट जो लोग आंसर नहीं कर रहे, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है. फिर से सारे क्वेश्चंस जो है मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे. हाँ, या टेल मी. See, the equation is CuCl2 is reacting with H2S to form CuS plus 2HCl. Okay, they're saying that excess amount of H2S is bubbled. So ये जो CuCl2 जो है, entire amount will be converting into CuS. It is a balanced equation. 0.1 molar 1 liter solution में CuCl2 का moles कितना रहेगा? Molarity is equals to again moles upon volume in liters. So it will be 0.1 moles. From the stoichiometry, CuS भी कितना बनेगा? ये पूरा खत्म हो गया तो CuS भी 0.1 मोल मिलेगा and HCl will be 0.2 moles. 0.1 mole CuS का mass of CuS will be equal to 0.1 mole into 63.5 plus 32. It is nothing but 95.5 gram per mole. Mole cancel होगा, which is equal to 9.55 grams. So option A is right. 9.55 grams of CuS is produced. HCl का moles कितना बना है? 0.2 mole.
from every 1 mole of HCl, you will be getting 1 molecule of or 1 ion of H positive. They're asking the concentration of H positive ions. So HCl 0.2 mole है तो H positive भी कितना रहेंगे? This is also 0.2 mole. Yes. Molarity of H positive is equals to उसका moles 0.2 upon total volume now is 2 liters. it is 2 liters. So divide by 2. So the answer is 0.1. So both options A and C are correct. But तुम लोग के की में only A दिया है, but A and C both of them are correct. Is this clear? Yes, sir. Okay. On this question, एक क्वेश्चन तो तुम लोग को अभी कर लेना चाहिए. 2 samples कल पढ़ा है ना, mixing of 2 solutions. 2 samples HCl of 1 molar and 0.25 molar are mixed. Find the volumes of these samples taken in order to prepare 0.75 molar of the solution. Assume no water is added. Sir, Yeah. ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन इसके नीचे थे. हाँ ऑप्शन इसके नीचे है 1 2 3 4 1 2 3 ऐसा कुछ है ना, इसमें से बता दो. 1 2 4 1 2 and 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 3 डी and आएगा 4 डी. सारे आता है 1 2 3. अभी सब 1 2 3 and 4 डी आएगा. वर्कशीट के हिसाब से आंसर इज डी. Those who are attempting the homework, they will definitely have an advantage. Those who are not attending homework or those who are not attempting homework, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है if you are procrastinating things. ये होमवर्क सबसे बहुत पहले दिया है ना, लास्ट वीक दिया है मैंने. What is the formula for mixing law? Final molarity M final will be equal to M1 V1 plus M2 V2 by plus V1. M2 V2 upon V1 plus V2. Final molarity is given as 0.75 molar. M1 कितना है 1 and let the volume be V1 plus M2 कितना है 0.25, let the volume be V2. This must be equal to 0.75 times V1 plus V2. So it is V1 plus 0.25 V2 is equals to 0.75 V1 plus 0.75 V2. So 0.25 V1 must be equal to 0.50 V2. So V1 upon V2 is nothing but 2:1. So किस किस का रेशियो 2:1 है देख लेना. 1 is also 2:1, 2 is also 2:1, option 3 is also 2:1, 4 is also 2:1. So सारे सही है. Okay. लेकिन ऑल ऑफ द अबव किधर दिया है? ऑल ऑफ द अबव क्या नहीं दिया है, ऑप्शंस मैंने पूरा नहीं लिखा. ऑप्शन ए में 1 2, ऑप्शन बी में 2 3 ऐसा कुछ दिया हुआ है. बट हमको इतना ही सोचना है ना, आंसर कैसे लेके आया और सॉल्यूशन का प्रोसीजर क्या है वो देखना है. डोंट वरी अबाउट ऑप्शंस. Is the solution procedure clear to everyone? Yes, sir. Okay. Next question. Solve this question and tell me your answer.
Everyone put your answers in the chat. Option 66 ml. 66 ml आया है. ओके. 33 ml आया है किसी को. कौन कौन क्वेश्चन कैसे करना है, कौन कौन लॉस्ट है, प्लीज इन योर चैट आंसर मी मी करते जाओ. I Sir, just want to know. हाँ. sir, Yeah. so what we have to do? ये क्वेश्चन में किस किस को सॉल्व करना नहीं आ रहा है और किस किस को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लीज इन द चैट बॉक्स. किस किस को डाउट है करके लिखो. आंसर इज 33. कुछ लोगों का आया है बट किस किस को नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या लिखना, क्या क्या करना है क्वेश्चन में. They're asking us to calculate the concentration of OH minus ions. OH minus ions किस किस के अंदर से आ रहा है? ये जो BaOH twice है, BaOH twice है. If it dissociates, BaOH twice, if it is dissociating, it will convert into Ba2 positive plus 2 OH minus. तुम लोग को डिसोशिएट करना आता है ना. OH जो है उसका चार्ज है -1 OH माइनस, वैसा 2 है, सो यू आर हैविंग 2 OH माइनस. इन ऑर्डर टू बैलेंस द पॉजिटिव चार्ज, Ba के ऊपर 2 पॉजिटिव रहना पड़ेगा. ओके, सो फ्रॉम एवरी 1 मोल ऑफ इट यू आर गेटिंग 2 मोल ऑफ OH माइनस. सिमिलरली NaOH जो है, it will dissociate to give you Na positive plus OH minus. For every 1 mole of it, NaOH, you will get 1 mole of OH minus. Suppose let us say you are adding V volume of BaOH twice. So what will be the moles or millimoles? ml में add put कर रहे तो millimoles हो जाएगा. What will be the millimoles of BaOH twice? It will be V into 0.4. Hence, what will be the moles of OH minus? It will be 2 into V into 0.4, which is 0.8 V. What are the moles of NaOH? It is 50 into 0.3. 50 into 0.3 कितना हो जाएगा? 15. 15. So moles of 15. इसके अंदर से भी कितना है? 15 है.
So what are the total moles of OH minus? 15 plus 0.8 into V. It will be 15 plus 0.8 times V. What will be the molarity of it? These are millimoles, right? 0.5. ये millimoles है, moles नहीं है, millimoles, because you are multiplying the volume in terms of ml. So molarity will be is equals to millimoles 15 plus 0.8 V upon total volume is 50 plus V. and that is equal to 0.5 दिया हुआ है. Hence it is 15. This implies 15 plus 0.8 V must be equal to 25 plus 0.5 V. So 0.5 V इस साइड गया तो it is 0.3 V is equals to 10 or V is equals to 10 upon 0.3, which is equals to 100 upon 3. 100 upon 3 is 33.333. Or they are saying that it is 33 ml. In the solution, you are having BaOH twice as well as NaOH. BaOH twice के अंदर से भी OH minus आ रहा है, NaOH के अंदर से भी OH minus आ रहा है. So the total OH minus present inside the system is sum of both of them. For every 1 mole, you are getting 2 moles of OH minus. अभी moles कितना है वो पता करने के लिए volume, they are asking for volume ना. Suppose V ml mix किया तो the moles of BaOH twice will be V into 0.4. Corresponding moles of OH minus will become 0.2 into V into 0.4, which is 0.8 V. Moles of NaOH will be 15 to 0.3, which is 15. So moles of OH minus is also 15. So the total moles of OH minus are 15 plus 0.8 V millimoles. Molarity is equals to millimoles upon volume in ml. Initially भी volume ml में ही लिया है, अभी भी volume ml में लो. Which gave us the answer 33.33 ml. Is this clear? Yes, sir. सर Yeah. एक बार वो एक्सरसाइज फर्स्ट के 65th बताओ ना. Exercise first के 65th क्वेश्चन चाहिए क्या? एक मिनट रुको, इसमें लिया नहीं है, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेना, बाकी लोग ये क्वेश्चन करते रहना. 10 ml of 1 molar BaCl2 and 5 ml of 0.5 molar K2SO4 are mixed together to precipitate out BaSO4. The amount of BaSO4 precipitated will be. First write the equation. पहले एक क्वेश्चन कर लेना, फिर 65th क्वेश्चन है ना पूछा तुमने कार्तिक 65. Yes. करते हैं. First write the equation. BaCl2 is reacting with K2SO4 to form BaSO4 plus 2KCl. They are saying that BaSO4 is a precipitate. कितना precipitate मिलेगा करके पूछ रहा है. BaCl2 add कितना किया है, which is 10 ml into 1 molar, which is 10 millimole. K2SO4 add कितना किया है, which is 0.5 into 5 ml. कितना है ये 2.5 millimole. One mole is reacting with 1 mole of K2SO4 to form 1 mole of BaSO4. Okay. So अभी limiting reagent क्या हो गया?
ये 2.5 है ना, so this will be the limiting reagent. Only 2.5 moles of it will be reacting. So ये कितना बनेगा? 2.5 millimole बनेगा. सर आंसर 2.5 डी है क्या? आंसर डी है. वो है ना 2.5 मिलीमोल है. मिलीमोल मतलब कितना हो जाएगा? 2.5 into 10⁻³ मोल, which is equals to 0.0025 mole. Answer is D. Answer is D. 65 ना. What is the molarity of the H2SO4 solution that has a density of 1.84 gram per cc and contains 98% by mass of H2SO4? क्या हुआ इसमें कार्तिक? %98 weight by weight H2SO4. Assume whenever you are given percentage weight by weight, 100 assume grams 100 grams. 100 grams of solution. solution. So what is the mass of H2SO4? It is 98 grams. 98 grams. 98 gram. What will be the moles of H2SO4? 1. Very good. 98 gram upon 98 gram per mole. Gram cancel होगा, which is nothing but 1 mole. Okay. And they're asking what is the molarity. Molarity is equals to moles of solute upon volume of solution in liters. You are given density, and if you know mass, density is equals to mass upon volume, or volume is equals to mass upon density. Mass is 100 gram and density is 1.84 gram per cc. So ये जो volume आया है, this is in terms of ml. Liters में कितना होगा? 100 upon 1.84 into 10⁻³ which is 1 upon 18.4 liters. Option B. So molarity, option B was molarity is 1 divided by 1 upon 18.4 which is 18.4 molar. Option B. Easy था ना? Whenever you are given percentage weight by weight, assume 100 grams of solution. You can also solve this question by assuming 1 liter of solution. वो बड़ा पड़ेगा. सर Yeah. इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में से क्वेश्चन नंबर 2 बताओ ना. In text exercise 2. The simplest formula of a compound, ये empirical formula में हमको पढ़ना है, अभी ये किया नहीं है, but फिर भी empirical formula मतलब कुछ नहीं है. The simplest formula of a compound is called as empirical formula और कुछ नहीं. They are saying 50% by mass is of element X and 50% by mass is of element Y. Okay, so X का mass, let us take 100 grams of the compound. यस सर. Okay, out of those 100 grams, 50 grams will be of X and 50 grams will be of Y na. So what will be the moles of X? Equals to उसका mass 50 gram divided by 10 Sir, gram per mole, Second option. which is equal to 5. For Y, moles of Y will be equal to 50 gram divided by 5/2. 2.5. is equals to 5/2 mole. Okay,
So x का कितना है? x you have 5 and y you have 5/2. 5 cancel कर दो. 5 cancel कर दे you are having x into y half. ऐसा नहीं लिखेंगे. It will be x to y. Simplest formula is x to y. Okay, sir. Okay, sir. एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में अभी हमने एग्जैक्ट डिस्कस नहीं किया, बट उतना ज्यादा कुछ नहीं है वो. You will be given percentages, mass percentages. You need to convert that into moles. Once you convert that into moles, you can write the molecular formula. Any other doubts? I accept ये जो questions किया है हमने, these are tricky, these are lengthy, but the concepts are easy. Try to understand the question और मैंने कैसे solve किया है. Please, after today's lectures, after maths lecture है क्या, उसके बाद तुम लोग को physics है. Physics है. After physics lecture, again go through these things. The basic idea is molarity is equals to moles upon volume. If you are taking the volume in terms of liters, you will get moles. If you are taking the volume in terms of ml, you will get millimoles. क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है देखो. Al इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में Al3 पॉजिटिव का पूछा है. मोलारिटी कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी पूछा है. सो कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Al3 पॉजिटिव. इसके लिए एक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं हम. इनिशियल उससे मोल्स निकाला, मिलीमोल्स निकाला, डिवाइड बाय यू आर पुटिंग वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ ml. This is an acid base neutralization reaction. ये तो डायरेक्ट है. कितना बन रहा है वो देखना है. This is according to mixing law. Again, you need to calculate the concentration of OH minus. For that, you need to write the equation. I hope these questions are clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are having a test on Sunday, right? The portion is strength of the solutions. जो पहले भी किया है ना हमने. Whenever you are given mass percentage, assume 100 grams of solution. Whenever you are given volume percentage, assume 100 ml of the solution. Molarity, density देख के क्या क्या पूछा गया है ये सब रहेंगे. Again, the calculations will be easier. Don't need to worry. Just you need to have simple definitions. अगर वो clarity है तो कोई भी question बन जाएगा. Please solve other questions. Exercise 1 तक ही discuss किया मैंने. Exercise 2 वाले questions तुम लोग उसमें भी post किया ना. Question numbers 1 to 35, 36 वो पहले है. अब तो you can solve till question number 55. You can attempt till question number 55. बीच में से कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेगा बिकॉज इनके लिए और भी ज्यादा रिएक्शंस और कॉन्सेप्ट्स लगेगा. इफ यू आर नॉट हैविंग एनी गिवन रिएक्शन, अगर पता नहीं चल रहा कौन सा रिएक्शन है, once गूगल इट एंड गेट द रिएक्शन. एंड वो तुम लोग स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस कर पा रहे कि नहीं वो चेक करो. रिएक्शंस याद रखना और लिखना वो सब बाद में. Okay. I hope today's lecture is clear to everyone. Yes, Sir, sir. सिर्फ Yes, sir. strength of solution होगा. Yeah,